Hello. Hi, dear friends. Wish you a very, very divine greeting of this eternally beautiful day. You will say, what is it today? What is so eternally beautiful for this day? My dear friends, everything resides within. As is the mind, so is the outside world. As is the inner world, so is the outside world. So actually, every day is actually as divine and as auspicious as every day. I mean to say that every day is actually as beautiful and as divine as all of us are. Correct? That's why we say good morning, good afternoon, have a good day. Why do we say it every day? Because we want every moment of us and of everyone around us, our loved ones, our colleagues, our co-mates, in fact, every one of us, every brother and sister of ours, to remain actually eternally blissful, and we wish all the good prospects for them every moment. So, my dear friends, actually, I would like to commence this session by a very beautiful quote. As the name or the topic of our beautiful session signifies, in order to in order to prevent the depletion, we need to undergo the process of deletion. There is a little difference of only one letter P, depletion and deletion. You will say, what does it mean actually? It is going out of our mind. What does it mean? What do you mean to say? My dear friends, actually, I wish to say that in order to undergo the depletion of the negative prospects, we need to actually delete certain things. We need to undergo the deletion process for certain aspects. Correct? Now, all of us do want the complete eradication of the negative aspects, of the unwanted aspects. Like in a garden, the gardener daily comes and he actually frees the garden by actually uprooting the weeds, that is, the unwanted plants. Correct? We as human beings also undergo the detoxification process through certain modifications in our lifestyle. Correct? So actually, what are we doing? We are deleting certain things. We are actually undergoing the deletion process, that is, the deletion of the unwanted things. Correct. This is actually the law of nature. And why are we undergoing the delete and why are we undergoing the deletion process? Because we want to protect and actually maintain the overall integrity of the depletion process. Now what do we actually want to sustain, or what do we actually do to actually maintain the overall consistency or the overall sustenance of certain things so that they do not get depleted? Those are the things that we want to preserve. Those are the things which we do not want to get extinct. Be it, for example, be it for the detoxification process, we want to remain healthy. Therefore, we delete the unwanted elements from our body because we want to remain healthy. We want to protect the overall sanctity and integrity of our holistic health. Correct? It is the universal law of nature. You can pick up anything. Like, in order to protect the extinction of certain
animals from our beautiful planet Earth, we are actually formulating certain rules, certain legal obligations we are imposing on the entire mankind in order to protect the overall integrity of certain species which are very important for us so that they do not get extinct. So in order to actually protect the depletion of those species or the extinction of those species, we are deleting certain things from the entire society. Now, what are those things? We are trying to actually remodify or remodulate the entire thinking process, the entire belief systems of the society. Like as he says, Sam Dam Dand Bhed. Even if certain people are not improving by by actually giving them the wisdom, though everyone is wise within, but still they do not get improved. We have to impose certain legal obligations. Now, my dear friends, this is the basis which we have tried to understand. Like, what do we mean by the quote? In order to prevent the depletion, we need to undergo the deletion process. Kitna sundar hai na, really. And this is applicable for every aspect of nature. Now if we actually go in a more subtle level, my dear friends, we can actually relate it to a very, very beautiful thing. My dear friends, actually, as we use the word Shiv Shakti, Shiv means God, the eternal Father, our eternal parent, the Almighty, whose light and might is sustaining the entire universe. And what is the light and might of that? That light and might is purity. That light and might is the overall we can say the pure eternal aspect, which is eternally powerful in itself, which is actually the holistic energy driving the universe in a very light manner, hence radiating light to every being of the society. Correct? And that defines the overall contentment and bliss, that is Anand. Anand. जो इनेबल करता है परमात्मा को इस सृष्टि को उजागर करने में एंड लाइट रेडिएट करने में, एंड ये एक लाइटनेस का एहसास अपने आप में एक बहुत दिव्य रूहानी शक्ति है. और हम उनके बच्चे, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे, हम सब आत्माएं, हम सब इटर्नल बीइंग्स. वो परम है इन सब शक्तियों में. कौन सी शक्ति? पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और ज्ञान, विजडम. करेक्ट? विजडम, जिसमें आता है त्रिनेत्री. त्रिनेत्री मीन्स यूजिंग द थर्ड आई टू ऑपरेट योर डेली चोर्स. करेक्ट? तो वो तो परमात्मा है, एंड तभी हम उनको अपने डेली चोर्स करने के लिए रिमेंबर करते हैं. इन विच लाइक इन गीता वी यूजुअली से मन मना भव. मन ही मन उनका सिमरन करते हुए, उनको अपनी रिमेंबरेंस में रखते हुए अपना काम करो. फॉर एग्जाम्पल, we actually try to remember our parents, and it's usually said whenever you are facing any difficulty, just remember your mother. आपको उनकी कोई wise thought याद आएगी, आपका उनका कोई wise lesson याद आएगा, जिससे आपका सारा काम हो जाएगा. एंड वो तो इटर्नल पेरेंट हैं, ऑलमाइटी. आप उनको अगर मन ही मन रिमेंबर करोगे तो आप में एक दिव्य शक्ति का जागर होगा. योर माइंड विल बिकम calm and you will radiate eternal divinity in your daily chores. So, my dear friends,
एंड यही एक दिव्य रूहानी शक्ति है जो एक लाइटनेस का अनुभव कराती है। तो ये शक्ति है, ये पावर है, एंड ये लाइट है, एंड हर बीइंग को, हर आत्मा को, हम सब आत्माएं, हमारा आत्मविश्वास एक इटर्नल लेवल पे जाता है। एंड तभी वो वर्ड आता है शिव शक्ति। यू नो शिव शक्ति कौन है? शिव शक्ति हम हैं। हम हैं परमपिता परमात्मा के बच्चे। करेक्ट। जैसे कहते हैं कि अ फादर सेज कि उनके जो बाजू है ना, उनकी जो मतलब उनके जो दोनों भुजाएं हैं वो उनके बच्चे हैं। करेक्ट। मदर ये कहती हैं, हर पेरेंट ये कहता है, तो वो तो ऑलमाइटी पेरेंट हैं। तो हम उनकी भुजाएं हैं जो हेल्प करेगा उन्हें इस यूनिवर्स को पैराडाइज बनाने में, हेवन बनाने में। अगर हम उनकी प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, जो उनके डिवाइन वर्चुअस, जिनके वो ओशन हैं, जिनको वो सिंपलाइज करते हैं, उसको हम अगर अपनी स्ट्रेंथ माने, वीकनेस नहीं पावर मानकर चलें, तो वो एक इटर्नल माइट देगा जो ब्यूटीफुल लाइट रेडिएट करवाएगा हमारे थ्रू, उनकी कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस। दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट वी आर द शिव शक्तिस। एंड शिव शक्ति इज एक्चुअली symbolic. Yes, it is actually symbolic, my dear friends. अब शिव शक्ति एक्चुअली हम नर्चरर के लिए भी यूज करते हैं, दैट लाइक वी हैव टू नर्चर आवर एवरी थॉट, आवर एंटायर लाइफस्टाइल, एंड हेंस आवर लव्ड वंस इफ वी आर स्टेबल विद इन। द चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप कहेंगे मैं ये क्यों, वी हैड स्टार्टेड विद अ कोड दैट फॉर दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स वी नीड टू अंडरगो द डिलीशन। ना डिलीशन हमें किसका करना है? नेगेटिविटी का। अगर हम अपने आप को इतना शिव शक्ति समझ कर चलेंगे ना, शिव की शक्ति अपने आप को अगर समझ के चलेंगे, उनकी शक्ति हमें हेल्प करेगी उनके दिव्य पाथ पर चलने के लिए, जिससे अपने आप ही, जैसे एक बाल्टी में अगर गंदा पानी होता है और उसमें अगर हम साफ पानी भरना शुरू करें, गंदा पानी अपने आप निकलता जाएगा, गंदा पानी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम इस प्रिंसिपल पे अपनी एंटायर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी ओवरऑल आइडियोलॉजी को मॉडिफाई करें, अपने एंटायर बिलीफ सिस्टम को इसके ऊपर वर्क करें, करेक्ट, अपनी ओरिजिनलिटी हमारी निखर के आएगी इन एवरी चोर, बिकॉज हमारी पर्सनालिटी बहुत दिव्य रूहानी हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, एंड अपने आप ही वो एक, एंड अपने आप ही डिप्लीशन आज के टाइम में, what all is getting extinct? The moral values. So in order to prevent the depletion of those moral values so that they do not get extinct, we need to undergo the deletion. अब deletion तो automatically हो जाएगा जब अपने आप को हम शिव शक्ति मान के चलेंगे। And Shiv Shakti is actually used for the nurturer. Like we have to nurture our own thoughts, our own ideology on which we are operating in this srishti or carrying our own selves. अब ये एक nurturer के लिए यूज होता है, and nurturer we know is the mother, है ना, उनको mother तो बोलते ही हैं। Females with the nurturer हैं। A being, for a being, it doesn't matter what gender we belong to, whether a male or a female or any gender for that matter. Correct? But अगर हम इसको समझने की तरीके से अगर समझे ना, एंड जिसकी आज रिक्वायरमेंट भी है, women empowerment. Correct? Women empowerment. Now, in order to sustain their overall integrity, because आज के time में, if we see the real scenario in our society, women are actually undergoing a lot of difficulties because of certain belief systems of our society. Though it is undergoing the gradual change, but still the negative elements are still persisting. तो उसके लिए हमें क्या करना है? So in order to prevent the depletion of the moral values, we need to really understand that they are the real nurturers. The females are the real nurturers. As we know, they are the mothers. उनको हम कहते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति is symbolic क्योंकि हम उनको नवरात्रि में जो हम पूजा करते हैं, 9 देवियाँ, हम फेमिनिज्म की रिस्पेक्ट करते हैं। एक nurturer, creation, the overall nourishment which is sustaining the entire society. This is sthapna, palna.
जो सृष्टि की करते हैं, जो मदर का कर्तव्य है, जब हम 9 मदर्स को याद करते हैं ताकि एक मदरहुड की एक दिव्य शक्ति पूरी यूनिवर्स में जागर हो एंड उसकी सैंक्टिटी को सब लोग रिस्पेक्ट करें, समझें एंड उसको सस्टेन करें, तो ऑटोमेटिकली हम उसको करने के लिए, तो उसकी इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, सो दैट दे डू नॉट गेट डिप्लीटेड, वी नीड टू डिलीट सर्टेन एस्पेक्ट्स, एंड अपने आप डिलीट होंगे जब हम अपने आप को हम परमात्मा की संतान, दिव्य आत्मा समझकर इस सृष्टि पे अपना रोल अदा करेंगे. करेक्ट, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. तो उसके लिए जब हम समझे कि वो जो दिव्य शक्ति जो हमारे घर में है, बी इट आवर मदर, बी इट आवर सिस्टर, and likewise treating every being around us, अगर हम रिस्पेक्ट, बेसिकली फेमिनिज्म की अगर बात करें, तो हम उनकी रिस्पेक्ट इतने ब्यूटीफुल तरीके से रेडिएट हो जाएगी, इतने ब्यूटीफुल तरीके से रेडिएट होगी, और तभी हम उनको नवरात्रे में शिव शक्ति की पूजा करते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, नवरात्रे. नव मीन्स 9 in Sanskrit, correct? And Ratri means night. तो 9 mothers जो symbolic हैं, जो 9 मदरहुड एनर्जीज को हम रिमेंबर करते हैं कि इटर्नली बहुत ही ब्यूटीफुल पावर, जो इतनी सटल लाइट रेडिएट करती है इन द एंटायर यूनिवर्स, इतनी ब्यूटीफुल पावर. करेक्ट. तो उससे क्या होगा? उससे रात्रि फिनिश हो जाएगी. दैट इज नाइट, जो इस सृष्टि को जो ढका हुआ है, नाइट किसकी, डार्कनेस ऑफ आवर ओन बिलीफ सिस्टम्स, दैट विल गेट इरेडिकेटेड कंप्लीटली. कितना ब्यूटीफुल है. और अपने आप नव युग की भी स्थापना होगी. नव ऑल्सो मीन्स न्यूनेस. तो अपने आप एक नव युग की स्थापना होगी. तभी हम नवरात्र के बाद दशहरा भी मनाते हैं. दशहरा मीन्स कि 10 रावण के सिर हार गए. कौन से सिर? मतलब what all it is symbolic. 10 vices, that is काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. That is lust, greed, ego, anger, and attachment. That will get diminished. And 5 more subtle vices are associated with these 5 main vices. तभी रावण के 10 सिर दिखाते हैं. तो नवरात्र जब मदरहुड की इटर्नल दिव्य शक्तियों को हमने रिमेंबर किया ना, जिसमें हम खुद भी पावरफुल हुए, एंड इस सृष्टि में फेमिनिज्म की इतनी रिस्पेक्ट हुई, एक नवयुग की स्थापना कि वो तो रात्रि, मतलब जो दशहरा, जो मतलब 10 सिर, रावण के 10 सिर जो नेगेटिविटी को सिंबलाइज करते, दिस इज एवरीथिंग इज सिंबॉलिक एक्चुअली, वो अपने आप हार जाएगा एंड एक नवयुग की स्थापना होगी. So that is so eternally beautiful. That's why it's said, in order to prevent depletion, we need to really undergo the deletion. And it's actually applicable in each and every aspect of the universe. We just need to experiment it, work on it, realize it by doing continuous introspection and manan chintan. हम खाली बैठते हैं ना, हमारा यूजुअली टाइम वेस्ट थॉट्स में जाता है, व्यर्थ संकल्पों में जाता है, जिनका यूजुअली सिर पैर नहीं होता. एंड 90% ऑफ द थॉट्स और 80% ऑफ द थॉट्स आर लाइक दैट. अगर हम इसको थोड़ा नोटिस करें तो हम इसको, और अगर समर्थ संकल्प में इनको परिवर्तन करना, मतलब एक रिसोर्सफुल थॉट्स में अगर इनको कन्वर्ट करना है ना, वो अपने आप होगा जब अपने हम थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे. हम ऐसे जब मनन चिंतन करते रहेंगे ना, बिकॉज हम सोचेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल कोट जो हमने आज डिस्कस किया, जिसके बारे में कि किन किन चीज़ों में एप्लीकेबल है, मेरे से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ एसोसिएटेड है जिसमें एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं. यू कैन पिक अप ईच एंड एवरी थिंग, यू कैन पिक अप एनी थिंग, एंड उसमें ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता ही है, आइदर इन फिजिकल मैनर और इन अ कोर सटल मैनर. यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड इट्स अ डिवाइन होमवर्क. एंड रोज़ अपने आप को दिव्य रूहानी शक्ति से इंचार्ज करो, एनलाइटन करो, तो आप एक ब्यूटीफुल लाइट हमेशा रेडिएट करोगे. गुड बुक्स पढ़ो, मेडिटेट करो, like we have been doing a lot of meditative sessions in our sessions here on this portal, and आप बहुत एक अपने आप को, and आपके पास अपने अपने तरीके भी हैं जो आपको एक लाइट अनुभव कराता है, be it a bhajan, be it some soothing song, or anything which gives you power, anything positive, by reading certain book or by doing certain
productive things which will help you make feel which will help you feel light within, radiate calmness within, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. एंड यही एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रहस्य है कि हम जितने अंदर से लाइट होंगे ना, हम उतने पावरफुल होंगे. और यही हमारी पावर है, और यही तो गॉड की पावर है. एंगर नहीं है उनकी पावर, उनकी एंगर है अंदर से लाइटनेस और इन प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, इन विजडम. इनको अगर हमने अपनी इन प्रिंसिपल्स पे चल के इनको अपनी शक्ति बनानी है, अपने आप को पावर बनानी है, अपना एक बहुत एक ब्यूटीफुल लाइट का अनुभव कराएगा. दैट्स वाई गॉड इज सेड इटर्नल ऑलमाइटी फादर, eternal almighty parent, who is the light of the entire universe, and we as his children are responsible to feel his light, realize his light by actually and helping us to actually re-invoking our own light and being light while conducting our daily chores, radiating light while doing our daily chores, and hence that light will help every soul around us to re-invoke or reawaken their own light. हम कहते हैं ना, मुझे इससे बड़ी ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं, मुझे इस जगह से बड़ी ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं, मुझे इस पर्सन से बड़ी ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही हैं. करेक्ट, बिकॉज उनकी इनर लाइट को हम अवेकन कर रहे हैं. एक जगह की भी वाइब्रेशन कैसे बनती है? हम ह्यूमन बींग्स से, हमारे थॉट प्रोसेस से. करेक्ट, एक जगह तो नॉन लिविंग थिंग है, हम वहाँ पे एक लिविंग बींग्स रह रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल थॉट प्रोसेस इज क्रिएटिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इन दिस एंटायर यूनिवर्स. आर एवरी थॉट इज डूइंग अ वेरी वेरी impactful work on the entire universe. So, be it, so every thought which we are creating, we need to हमें इस पर बहुत ध्यान देना है, एक फोकस करना है कि वो कंस्ट्रक्टिव है या अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव या वेस्ट, व्हाटएवर. तो उसमें एक बहुत ही एक यूनिवर्स की एक एनर्जी पे एक उसका असर पड़ता है. तो बीइंग हिज चिल्ड्रन, दैट इज आवर इटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यही तो है हमारा कर्तव्य. तो this is the eternal lesson which we have learned. And yes, I have come to a very beautiful place, and I have really seen here that the trees are very huge. I have come in the hill station here, that is Darjeeling, and यहाँ पे बहुत huge pine trees हैं, and उनके roots, they are holding the soil so tightly, इतने deep roots, so they are holding it so that if any storm comes, they do not get uprooted. तो अपनी हमें फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हम खुद डिप्लीट ना हो जाए, हमारी मॉरल वैल्यूज़ डिप्लीट ना हो जाए. तो मैंने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को डिवाइन पावर बनाना है, जैसे डिवाइन ट्रीज ने अपने रूट्स को, अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया. देयर आर अनलिमिटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ सच ट्रीज, सच सो टॉल. तो यही है. In order to prevent the depletion, we need to undergo the deletion process very, very wisely. Now, it entirely depends upon us and how do we use our own third eye. That is the real eye of wisdom. God bless you. And that is self-realization will lead to God realization. And it's the entire process. ये हमारे human beings का ये कर्तव्य है. And that is being human. God bless you. बहुत 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 blessings to all of us. Om Shanti. God bless you. Jai Sachidanand ji. Take care. Om Shanti. Waheguru. Sat Shri Akal. And Assalamu Alaikum. ये सब beautiful words हैं जो हमें help करता है to realize our divine power, helping us to create light, be light, and radiate light, and helping every surrounding of us to continuously get enlightened. God bless you. Bye. Take care.